السلام علیکم. آج ہم فرسٹ ایئر انگلش بک 1 کے چیپٹر نمبر 2 کلیئرنگ ان دا اسکائی کی ریڈنگ کریں گے. کلیئرنگ ان دا اسکائی. دس از دا وے جیس said my father pointing with his cane across the deep valley below us. جس یہی وہ راستہ ہے ہمارے نیچے گہری وادی کے اس پار اپنی چھڑی سے اشارہ کرتے ہوئے میرے ابا جان نے کہا. I want to show you something you have not seen for many years. میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں جو تم نے کئی سالوں سے نہیں دیکھا ہوگا. Isn't it too hot for you to do much walking? کیا آپ اتنی شدید گرمی میں اتنا زیادہ چل سکو گے؟ I whipped the streams of sweat from my face to keep them from stinging my eyes. میں نے اپنے چہرے پر پھوٹتے ہوئے پسینے کے دھارے کو پونچھ لیا تاکہ وہ میری آنکھوں میں پہنچ کر جلن پیدا نہ کر سکیں. I didn't want to go with him. میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا. I had just finished walking a half mile uphill from my home to his. ابھی اپنے گھر سے ان کے گھر تک میں نے نصف میل پہاڑ کی چڑھائی طے کی تھی. I had carried a basket of dishes to mom. میں امی کے پاس رکابیوں کی ایک ٹوکری اٹھا کر لایا تھا. There were 2 slips in the road and I could not drive my car. سڑک پر 2 جگہوں پر پھسلن تھی اس لیے میں اپنی گاڑی چلا کر نہ آ سکا. And I knew how hot it was اور میں جانتا تھا کہ کتنی شدید گرمی ہے. It was 97 in the shade. سائے میں گرمی کی شدت 97 درجے تھی. I knew that from January until April my father had gone to 8 different doctors. میں جانتا تھا کہ میرے ابا جان جنوری سے لے کر اپریل تک 8 مختلف طبیبوں کے پاس جا چکے تھے. One of the doctors had told him not to walk the length of a city block. ان ڈاکٹروں میں سے ایک ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ وہ شہری ایک بلاک کی مسافت طے نہ کریں. He told my father to get a taxi to take him home. انہوں نے ابا جان کو بتایا کہ وہ گھر جانے کے لیے بھی ٹیکسی کر لیں. But my father walked home 5 miles across the mountain and told mom what the doctor had said. لیکن میرے ابا جان پہاڑی کے اس پار 5 میل چل کر گھر پہنچے اور امی کو بتایا جو کچھ ڈاکٹروں نے کہا ہے. 40 years ago a doctor had told him the same thing. 40 سال قبل بھی ایک ڈاکٹر نے یہی مشورہ دیا. And he had lived to raise a family of 5 children. میرے والد صاحب 5 بچوں کا کنبہ بنانے کے لیے زندہ رہے. He had done as much hard work in those years as any man. ان سالوں میں انہوں نے اتنی محنت مشقت کی ہوگی جتنا کوئی شخص کر سکتا ہے. I could not protest to him now. میں ان کے ساتھ اب احتجاج نہیں کر سکتا تھا. He had made up his mind. انہوں نے اپنا ارادہ کر لیا تھا. When he made up his mind to do a thing, he would do it if he had to crawl. جب وہ کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو وہ اسے کر گزرتے ہیں چاہے انہیں رینگنا ہی کیوں نہ پڑے. He didn't care if it was 97 in the shade or 16 below zero. انہیں پرواہ نہیں ہوتی چاہے سائے میں گرمی کی شدت 97 درجے ہو یا نقطہ انجماد سے 16 درجے نیچے ہو. I wept more sweat from my face as I followed him down the little path between the pasture and the meadow. چراگاہ اور سبزہ زار کے بیچوں بیچ ان کے پیچھے تنگ پگڈنڈیوں پر اترتے ہوئے میں نے اپنے چہرے پر سے مزید پسینے کو پونچھا. Suddenly he stopped at the edge of the meadow. اچانک وہ سبزہ زار کے کنارے پر رکے. Took his pocket knife from his pocket. اپنی جیب سے اپنا جیبی چاقو نکالا. And cut a wisp of alfalfa. اور لوسرین کا ایک مٹھا کاٹ لیا. He held it up between him and the sun. انہوں نے اسے اپنے اور سورج کے درمیان آڑ بنا لیا. Look at this Jess. He bragged. Jess اسے دیکھو. انہوں نے بڑے فخریہ انداز سے کہا. Did you ever see
better alfalfa grow out of the earth? क्या तुमने कभी इससे बेहतर लॉसरिन जमीन पर उगते देखा है? It's the best looking hay I have seen any place. इससे बेहतर घास मैंने कहीं भी नहीं देखी. I said, मैंने कहा. I have not seen better looking alfalfa even in the little sandy river bottoms. इससे बेहतर लॉसरन मैंने लिटिल सैंडी दरिया के नशीबी इलाकों में भी नहीं देखी. When I bought this little farm, everybody around here said I had ended up with my family at the country poor farm if I tried to make a living here, he bragged again. जब मैंने ये छोटा सा फार्म खरीदा तो यहाँ गिरदो नवा में हर एक ने मुझे कहा कि अगर मैंने इस नकारा फार्म को जरिया मुआश बनाया तो मैं अपने कुंबे का काम तमाम कर बैठूंगा. इसने दोबारा फख्र से बताया. It took me 30 years to improve these all worn out acres to make them do this. इन पुराने खस्ता हाल एकड़ों को ये पैदावार देने के काबिल बनाने और संवारने में मुझे 30 साल लग गए. I like these woods, Jess, my father said. Jess, मैं इन जंगलात का शिदाई हूँ, मेरे अब्बा जान ने कहा. Remember when we used to come here to hunt fox squirrels? क्या तुम्हें याद है जब हम गिलहरियों का शिकार करने यहाँ आया करते थे? Remember when we sat beneath these hickories and the squirrels threw green hickory shells down at us? क्या तुम्हें याद है जब हम इन मेवों के दरख्त के नीचे बैठा करते थे और गुलहरियां नीचे हम पर ही मेवों की कच्ची फलियां फेंका करती थीं? The morning wind just at the break of the day in August was so good to breathe. अगस्त के महीने में सवेरे सवेरे नसीम शहर में हवा खोरी कितनी पुरकैफ और पुरलुत्फ थी. I can't forget those days. मैं उन दिनों को नहीं भूल सकता. And in October, when the rabbits were ripe, and the frosts had come and the hickory leaves had turned yellow, and when the October winds blew, they rustled the big leaves from the tree and they fell like yellow raindrops to the ground. Remember, he said, looking at me with his pale blue eyes. और अक्टूबर में जब खरगोश बहार शबाब होते, कोहर छा जाती और मेवों के दरख्त के पत्ते पीले पड़ जाते थे और जब अक्टूबर की हवाएं चलती तो उनकी छेड़ से दरख्तों के बड़े बड़े पत्ते सरसराते और जमीन पर पीली बारिश के कतरों की तरह गिरते. याद करो, वो अपनी हल्की नीली आंखों से मुझे तकते हुए कहते हैं. How our hounds, Rex and Scout, would make the rabbit circle. किस तरह हमारे शिकारी कुत्ते खरगोशों को हिसार में लेकर भगाते थे. These were good days, Jess. That's why I remember this mountain. Jess, वो बड़े मजे के दिन थे. यही वजह है कि मुझे ये पहाड़ याद आता है. Is that what you wanted to show me? क्या यही कुछ है जो आप मुझे दिखाना चाहते थे? I asked. मैंने पूछा. Oh, no, he said as he began to climb the second bluff that lifted abruptly from the flat toward the sky. Oh, नहीं, ऐसा नहीं है, इसने कहा जैसे ही वो दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़ना शुरू करने लगे जो हमवार जमीन से यकलख्त सीधी आसमान की तरफ उठी हुई थी. The pines on the top of the mountain above us looked as if the fingers of their long bows were fondling the substance of a white cloud. हमारे ऊपर पहाड़ की चोटी पर सनोबर के दरख्त ऐसे दिखाई देते थे जैसा कि इनके लंबे टहनों की डालियां किसी सफेद बदली से अटखेलियां कर रही हों. Whatever my father wanted me to see was on the top of the highest point of my farm. अब्बा जान जो कुछ मुझे दिखाना चाहते थे वो मेरे फार्म की सबसे ऊंची जगह की चोटी पर था. And with the exception of the last 3 years, I had been over this point many times. और पिछले 3 सालों के अलावा मैं इस मुकाम पर 12 आ चुका था. I had never seen anything extraordinary upon this high point of rugged land.
اس ناہموار زمین کے اونچے مقام پر میں نے کوئی غیر معمولی چیز نہ دیکھی تھی. I had seen the beauty of many wildflowers, a few rock cliffs, and many species of hard and softwood trees. میں نے کئی جنگلی پھولوں کی خوبصورتی، چند پتھریلی عمودی چٹانیں اور سخت اور نرم لکڑی کے درختوں کی کئی قسمیں دیکھی تھیں. Why do you take the path straight up the point? آپ نے اس جگہ کے لیے بالکل عمودی راستہ کیوں لیا ہے؟ I asked. میں نے پوچھا. Look at these other paths. ان دوسرے راستوں کو دیکھو. What are they doing here? یہ یہاں کس لیے موجود ہیں؟ Within the distance of a few yards, several paths left the main path and circled around the slope, gradually climbing the mountain. چند گز کے فاصلے کے اندر اس بڑے راستے سے کئی پگڈنڈیاں نکلتی تھیں جو ڈھلوان کے گرد گھومتی بتدریج پہاڑی پر چڑھتی تھیں. All paths go to the same place, he answered. تمام پگڈنڈیاں ایک ہی جگہ جاتی ہیں، انہوں نے جواب دیا. Then why take the steep one? I asked. پھر ہم نے اس عمودی راستے کو کیوں اختیار کیا؟ میں نے پوچھا. I will explain later. He spoke with half breaths. میں اس کی وضاحت بعد میں کروں گا، انہوں نے ہامتے ہوئے کہا. He rested a minute to catch his second wind, while I managed to stand on the path by holding to a little sapling because it was too steep for my feet to hold unless I braced myself. تازہ دم ہونے کے لیے وہ ایک لمحہ سستانے کے لیے بیٹھ گئے، جبکہ میں ایک چھوٹے سے ننھے سے شجر کو تھام کر راستے پر کھڑا ہو گیا، کیونکہ راستہ اتنا عمودی تھا کہ میرے پاؤں وہاں ٹکے نہیں رہ سکتے تھے جب تک کہ میں اپنے آپ کو سنبھالے نہ رکھتا. Then my father started to move slowly up the path again, supporting himself with his cane. پھر میرے ابا جان نے چھڑی کا سہارا لیتے ہوئے دوبارہ دھیرے دھیرے راستے پر چڑھنا شروع کیا. I followed at his heels. میں ان کے پیچھے ہو لیا. Just a few steps in front of him a fox squirrel crossed the path and ran up a hickory tree. ان سے صرف چند قدم آگے ایک فاکس گلہری نے راستہ کاٹا اور دوڑتی ہوئی میووں کے درخت پر چڑھ گئی. See that, Jess? He shouted. Jess دیکھا؟ انہوں نے چلایا. Yes, I did, I answered. جی ہاں، میں نے دیکھا، میں نے جواب دیا. That brings back something to me. یہ مجھے کچھ یاد دلاتی ہے. He said. انہوں نے کہا. Brings back the old days to see a fox squirrel. But this won't bring back as much as something I am going to show you. کسی فاکس گلہری کو دیکھنے کے بیتے دن یاد دلاتی ہے، مگر یہ مجھے کچھ اتنا یاد نہیں دلاتی جو کچھ میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں. My curiosity was aroused. میرا تجسس بڑھ گیا. I thought he had found a new kind of wild grass or an unfamiliar herb or a new kind of tree. میرا خیال تھا کہ انہوں نے کوئی جنگلی گھاس یا کوئی انوکھی جڑی بوٹی یا کوئی نئی قسم کا درخت ڈھونڈا ہوگا. For I remembered the time he found a coffee tree in our woods. کیونکہ مجھے وہ وقت یاد تھا جب انہوں نے ہمارے جنگل میں کافی کا ایک درخت ڈھونڈا تھا. It is, as far as I know, the only one of its kind growing in our country. جہاں تک میں جانتا ہوں، ہمارے علاقے میں اگا ہوا اپنی نوع کا یہ واحد درخت تھا. Only twice did my father stop to wipe the sweat from his eyes as he climbed the second steep bluff toward the fingers of the pines. دوسری عمودی چٹان پر صنوبر کی ٹہنیوں کی طرف چڑھتے ہوئے میرے ابا جان اپنی آنکھوں سے پسینے کو پونچھنے کے لیے محض 2 مرتبہ رکے. We reached the limbless trunks of these tall straight pines whose branches reached toward the blue depth of sky. Or the white cloud was now gone. ہم ان اونچے سیدھے بغیر ٹہنے والے صنوبر کے تنوں تک پہنچے جن کی شاخیں نیلے آسمان کی وسطوں کی جانب اٹھی ہوئی یا سفید بادل اب چھٹ چکے تھے. I saw a clearing
A small clearing of not more than the 3/4 of an acre in the heart of this wilderness right on the mountain top. ठीक बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर इस बियाबान के दरमियान मैंने एक साफ किया हुआ इलाका देखा, एक छोटा सा साफ किया हुआ खेत जो 1 एकड़ की 3/4 से ज्यादा ना था. Now you are coming to something, son, he said as he pushed down the top wire so he could cross the fence. बेटा, अब हम उस खास चीज की तरफ आ रहे हैं, इन्होंने कहा जब उन्होंने बाड़ को अबूर करने के लिए ऊपर वाली तार को नीचे दबाया. This is something I want you to see. यही वो चीज है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था. Who did this? I asked. ये किसने बनाया है? मैंने पूछा. Who cleared this land and fenced it? ये जमीन किसने साफ की है और इसे बाड़ किसने लगाई है? Fenced it against what? किस चीज के खिलाफ बाड़ लगाई गई है? Stray cattle, if they ever get out of the pasture, he answered me curtly. I cleared this land and I fenced it. भटके हुए मवेशियों के लिए अगर वो कभी चिरागा से भाग निकले, इसने मुझे रूखेपन से जवाब दिया. मैंने ये जमीन साफ की है और इसके गिर्द बाड़ लगाई है. But why did you ever climb to this mountain top and do this? I asked him. मगर आप इस पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़े और ये कुछ क्यों किया? मैंने इनसे पूछा. Look at the fertile land we have in the valley. नीचे इस जरखेज जमीन को देखो जो हमारे पास वादी में है. Fertile, he laughed as he reached down and picked up a double handful of leaf-rot loam. जरखेज, वो हंसा जैसे ही वो झुका और दोनों हाथों को दुआ मांगने की तरह फैलाकर गले सड़े पत्तों वाली मिट्टी उठा ली. This is the land, son. This is it. I have tried all kind of land. ये है जमीन बेटा, बिल्कुल यही है. मैं तमाम इकसाम की जमीनें आजमा चुका हूँ. Then he smelled of the dirt. फिर इसने मट्टी को सूंघा. He whiffed and whiffed the smell of this wild dirt into his nostrils. फिर इसने मट्टी को सूंघा. वो अपने नथनों में इस जंगली मट्टी की बू सूंघता चला गया. Just like fresh air. बिल्कुल ताजा हवा की तरह. He said as he let the dirt run between his fingers. इसने कहा जैसे ही मट्टी इसने अपनी उंगलियों के दरमियान से बहने के लिए छोड़ दी. It's pleasant to touch too, he added. इसे छूना भी तकसीन बख्श है, इसने मजीद कहा. But dad, I said. मगर अब्बू, मैंने कहा. I know what you think, he interrupted. मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो, उन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा. Your mother thinks the same thing. तुम्हारी माँ भी यही सोचती है. She wonders why I ever climbed to this mountain top to raise my potatoes, yams and tomatoes. But Jess, he almost whispered. वो हैरान है कि मैं आलू, रतालू और टमाटर उगाने इस पहाड़ पर क्यों चढ़कर आया. मगर जेस, इसने तकरीबन सरगोशी की. Anything grown in new ground like this has a better flavor. मगर कोई भी चीज जो इस तरह की नई जमीन पर उगाई जाए उसका बेहतर जायका होता है. Wait until my tomatoes are ripe. You will never taste sweeter tomatoes in your life. इंतजार करो यहाँ तक कि मेरे टमाटर पक जाएं. इनसे ज्यादा शीरीं टमाटर तुमने जिंदगी भर में नहीं चखा होगा. They will soon be ripe too, I said as I looked at the dozen or more rows of tomatoes on the lower side of the patch. ये जल्द ही पक जाएंगे. मैंने खेत की नशीबी सिमत में टमाटरों के दर्जन भर या इससे कुछ ज्यादा कितारों को देखते हुए कहा. Then above the tomatoes were a half dozen rows of yams. फिर टमाटरों के बालाई तरफ रतालू की निस्फ दर्जन कितारें थीं. Above the yams were perhaps 3 dozen rows of potatoes. रतालू की बालाई सिमत शायद 3 दर्जन कितारें आलू की. I don't see a weed
in this patch I loved, won't they grow here? मुझे इस खेत में कोई खुदरू घास दिखाई नहीं देती है। मैंने हंसते हुए कहा, क्या वो यहाँ नहीं उगती? I won't let him, he said. मैं उसे यहाँ उगने नहीं दूंगा, उन्होंने कहा। Now this is what I have been wanting you to see. यही तो वो चीज है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। This is the cleanest patch I have ever seen. इससे बढ़कर साफ सुथरा खेत मैंने कभी नहीं देखा होगा। I bragged. मैंने फखर से कहा। But I still don't see why you climbed on the top of this mountain to clear this patch. मगर अभी तक मैं ये नहीं समझ पाया कि जमीन का ये टुकड़ा साफ करने के लिए आप पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़ आए। And you did all this against your doctor's orders. और आपने ये सब कुछ अपने डॉक्टर की हदायत के बरअक्स किया। Which one? He asked, laughing. कौन सी हदायत? इन्होंने हंसते हुए पूछा। Then he sat down on a big oak stump and I sat down on a small black gum stump near him. फिर वो शाहबलूत की एक बड़े से टहनी पर बैठ गए और मैं इनके करीब एक छोटे से स्याह गोंद के दरख्त के टहने पर बैठ गया। This was the only place on the mountain where the sun could shine to the ground. पहाड़ पर सिर्फ यही एक जगह थी जहां सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच सकती थी। And on the lower side of the clearing there was a rim of shadow over the rows of dark starwort plants loaded with green tomatoes. और इस साफ की हुई जगह की नशीबी जानिब हरे टमाटरों से लदे हुए गहरे सब्ज रंग के तन आवर पौधे थे जिन पर साय का एक हल्का था। What is the reason for your planting this patch up here? I asked. पहाड़ के ऊपर यहाँ जमीन के इस टुकड़े पर पौधे लगाने की क्या वजह है? मैंने पूछा। 20 times in my life, he said, a doctor has told me to go home and be with my family as long as I could. इन्होंने कहा, मेरी जिंदगी में 20 मरतबा डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं घर जाऊं और अपने कुंबे के साथ इतना वक्त गुजारूं जितना मैं गुजार सकता हूं। Told me not to work. इन्होंने मुझे बताया कि मैं काम ना करूं। Not to do anything but to live and enjoy the few days I had left me. कुछ भी ना करूं, बस जिंदा रहूं और जिंदगी के बकिया दिनों के मजे लूटूं। If the doctors have been right, he said, winking at me. अगर डॉक्टरों की राय दुरुस्त थी, इन्होंने मुझे आंख मारते हुए कहा। I have cheated death many times. तो मैंने मौत को कई मर्तबा धोखा दिया है। Now I have reached the years, the good books, lost to man in this lifetime upon this earth. अब मैं उस उम्र को पहुंच गया हूं जितनी उम्र मुकद्दस किताब इंसानों को इस दुनिया में बसर करने की इजाजत देती है। 60 years and 10 यानी 70 साल। He got up from the stump and wiped the raindrops of sweat from his red wrinkled face with his big blue bandana. वो ठंड से उठ खड़े हुए और अपने सुर्ख झुर्रियों भरे चेहरे को अपने बड़े नीले रुमाल से पसीने के कतरे पोंछने लगे। And something else, Jess, he said, motioning for me to follow him to the upper edge of the clearing. Jess, मैं तुम्हें कुछ और दिखाना चाहता हूँ। इन्होंने साफ की हुई जगह के बलाई किनारे की तरफ मुझे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कहा। You won't understand until you reach 60 and 10. तुम नहीं समझ पाओगे जब तक तुम 70 साल के नहीं हो जाओगे। After these years, your time is borrowed. बाकी की जिंदगी उधार पर होती है। And when you live on that kind of time, और जब तुम उम्र के उस हिस्से में जीते हो, something goes back. तो फिर कोई ऐसी चीज होती है जो माजी की गहराइयों में गुम हो जाती है। Something I cannot explain. कोई ऐसी चीज जिसकी वजाहत मैं तुम्हें नहीं कर सकता। You go back to the places you knew and loved. तुम इन जगहों में तसव्वुर में खो जाते हो जिनसे तुम्हारी आशनाई और मोहब्बत थी। See this steep hill slope. इस अमूदी पहाड़ की ढलवान को देखो।
He pointed down from the upper rim of the clearing toward the deep valley below. इन्होंने साफ की हुई जगह के बालाई गोल किनारे से नीचे गहरी वादी में इशारा किया. Your mother and I, when she was 19 and I was 22, cleared this mountain slope together. तुम्हारी माँ ने और मैंने जब वो 19 बरस की और मैं 22 साल का था, इकट्ठे इस पहाड़ की ढलवान को साफ किया था. We raised corn, beans, and pumpkins here, he continued, his voice rising with excitement. हमने यहाँ गल्ला, लोबिया और पीठा उगाया. इन्होंने अपनी बात जारी रखी. जोश से इनकी आवाज बुलंद होती गई. He talked with his hands too. इन्होंने अपने हाथों से भी हमकिलाम किया. Those were the days. वही तो मजे के दिन थे. This was not land one had to build up. ये जमीन किसी से काबिले काश बनने की नहीं थी. It was already here, as God had made it, and we had to do was clear the trees and burn the bush. जैसे खुदा ताला ने इससे बनाया था, हमें तो महज दरख्त साफ करना पड़े और झाड़ियों को नजरे आतिश करना पड़ा. I ploughed this mountain with the cattles. The first time it was ever ploughed. इस पहाड़ पर जो सबसे पहला हल चलाया गया, वो मैंने मवेशियों के जरिए से चलाया था. And we raised more than a barrel of corn to the shock. और हमने फी गप्पा से 1 बैरल से ज्यादा गल्ला पैदा किया. That's why I came back up here. यही वजह है कि मैं यहाँ ऊपर लौट आया. I went back to our youth. हमें अपनी जवानी याद आ गई. And this was the only land left like that was. और सिर्फ यही जमीन हमारी जवानी के वक्त की जमीन जैसी थी. And Jess, he bragged regardless of my 60 years and 10. I ploughed it. और Jess, इन्होंने डींगे मारी. अपने 70 साल बुढ़ापे के बावजूद मैंने इस पर हल चलाया. Ploughed it with a mule. I have, with just a little help, done all the work. खच्चर से इस पर हल चलाया. मैंने बिल्कुल जरा सी मदद लेकर ये तमाम काम किया. It's like the land your mother and I used to farm here when I brought my gun to the field and took home a mess of fox squirrel every evening. ये जमीन उस जमीन जैसी है जिससे मैं और तुम्हारी माँ यहाँ काश करते थे जब मैं खेत में बंदूक लेकर आता था और हर शाम बड़ी तादाद में फॉक्स गुलहरियों का शिकार करके घर लाता था. I looked at the vast mountain slope below where my mother and father had farmed. मैंने नीचे वसी पहाड़ी ढलवान को देखा जहां मेरी माँ और मेरा बाप कभी खेती बाड़ी करते थे. And I could remember years later when they farmed this land. सालों बाद मुझे वो वक्त याद आया जब वो ये जमीन काश किया करते थे. It was on the steep slope that my father once made me a little wooden plough. यही अमूदन तिरछी ढलवान थी जहां मेरे बाप ने एक बार मुझे लकड़ी का एक छोटा सा हल बनाकर दिया था. That was when I was 6 years old and they brought me to the field to thin corn. ये उस वक्त की बात है जब मैं 6 साल का था और वो गले की अफजाइश की गर्ज से गले के पौधों की तादाद कम करने के लिए मुझे खेत में लाए थे. I lost my little plough in a furrow and I cried and cried until he made me another plough. एक नाली में मेरा छोटा सा हल गुम हो गया और मैं रोता चिल्लाता रहा यहाँ तक कि इन्होंने मुझे एक और हल बनाकर दिया. But I never loved the second plough as I did the first one. लेकिन मुझे दूसरा हल कभी भी इतना पसंद नहीं आया जितना मुझे पहला हल पसंद आया था. Now to look at the mountain slope round up with tall trees, many of them big enough to have sawed into the lumber at the mill. अब इस पहाड़ी ढलवान को देखना जहां ऊंचे ऊंचे दरख्त उगे हुए थे. इनमें मुतअद्दिद इतने बड़े थे कि इन्हें कारखाने में चीर कर इमारती लकड़ी बना सकते थे.
It was hard to believe that my father and mother had cleared this mountain slope and had farmed it for many years. ये यकीन करना मुश्किल था कि कभी मेरे अब्बू और मेरी अम्मी ने ये पहाड़ की ढलवान साफ की थी और कई सालों से उसको काश्त किया. For many of the trees were 60 feet tall, and the wild vines had matted their tops together. क्योंकि ज्यादातर दरख्त 60 फीट ऊंचे थे और जंगली बैलों ने इनकी चोटियों को आपस में उलझा दिया था. And Jess, he almost whispered, the doctors told me to sit still and to take life easy. और Jess, इन्होंने सरगोशी की. डॉक्टरों ने मुझे आराम करने और पुरसकून जिंदगी गुजारने का मशवरा दिया. I could not do it. मैं ये नहीं कर सकता था. I had to work. मुझे काम करना पड़ता था. I had to go back. मुझे वापस जाना पड़ा. I had to smell this rich loam again. मुझे ये जरखेज गले सड़े पत्तों की मट्टी दोबारा सूंघनी थी. This land is not like the land I had to build again. ये जमीन उस जमीन जैसी नहीं जो लोसरन उगाने के लिए मुझे तैयार करना पड़ी थी. This is real land. ये तो असल जमीन है. I had to come back and dig in it. मुझे वापस आना पड़ा और इसकी गोडी करना पड़ी. I had to smell it, sift it through my fingers again. मुझे इसकी बू सूंघना थी, इसे अपनी उंगलियों से गुजारना था. And I wanted to taste yams, tomatoes and potatoes grow in this land. मैं इस जमीन में उगे हुए रतालू, टमाटरों और आलूओं को चखना चाहता था. From this mountain top, I looked far in every direction over the rugged hills. My father and mother had cleared and farmed in corn, maize and cane. मैंने इस पहाड़ की चोटी से ऊंची नीची पहाड़ियों के ऊपर दूर दूर तक हर सिम देखा जिन्हें मेरे अब्बू और मेरी अम्मी ने साफ किया था और वहां गल्ला, मकई और गन्ना उगाया था. The one slope they had not cleared was the one from which my father had cleared his last small patch. एक ढलवान जिसे इन्होंने साफ नहीं किया था, ये वही ढलवान थी जहां पर मेरे अब्बा ने अपनी आखिरी जमीन का छोटा सा टुकड़ा साफ किया था. I followed him from his clearing in the sky, down a new path toward the deep valley below. इंतहाई बुलंदी पर साफ किए गए इस खेत से नीचे गहरी वादी की तरफ उतराई के एक नए रास्ते पर मैं इनके पीछे हो लिया. But why do you have so many paths coming from the flat up the steep second bluff? I asked, since he had promised that he would explain this to me later. मगर आपने मैदानी सतह से दूसरी अमूदी पहाड़ी के ऊपर जाने के लिए इतने ज्यादा रास्ते क्यों बना रखे हैं? मैंने इनसे पूछा क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि वो मुझे बाद में इसकी वजाहत करेंगे. ओह यस, ही सेड. ओह हाँ, उन्होंने कहा. अर्ली लास्ट स्प्रिंग, गुज़िश्ता मौसम बहार के आगाज में, I could not climb straight up the steep path. मैं सीधा ऊपर अमूदी रास्ते पर नहीं चढ़ सकता था. That was when the doctor did not give me a week to live. ये उस वक्त की बात है जब डॉक्टरों ने कहा था कि मैं एक हफ्ता भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा. I made a longer, easier path, so I would not have to do so much climbing. मैंने निस्बतन एक तवील आसान रास्ता बनाया ताकि मुझे ज्यादा चढ़ाई ना चढ़नी पड़े. Then, as I got better, he explained, I made another path that was a little steeper. फिर जब मैं निस्बतन सेहतमंद हो गया, इन्होंने वजाहत की, मैंने एक और रास्ता बनाया जो निस्बतन ज्यादा आमूदी था. And as I continued to get better, I made steeper paths. और जो मैं बेहतर होता चला गया, मैं ज्यादा आमूदी ढलवानदार रास्ता बनाता चला गया. That was one way of knowing I was getting better all the time. ये जानकारी हासिल करने का एक तरीका था कि मैं वक्त के साथ साथ तंदुरुस्त होता जा रहा हूँ. I followed him down the path that wound this way and that, 3 times the length of the path we had climbed.
میں پیچو خم کھاتے ہوئے راستے پر اس کے پیچھے پیچھے نیچے اترتا رہا۔ یہ راستہ اس راستے سے جس کے ذریعے ہم اوپر چڑھے تھے 3 گنا طویل تھا۔ تو آج ہم نے چیپٹر نمبر 2 کی ریڈنگ کمپلیٹ کر لی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔